Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start chapter number 4, pollutants and their effects on environment. Air pollutants and their sources. Carbon monoxide, CO, carbon dioxide, SO2, oxides of nitrogen which are NO and NO3. Chlorofluorocarbon, CFCs, etc. are the main air pollutants, poisonous gases produced during the decay of dead organic matter and particulate matter like soot, dust particles, pollens, metallic compounds, etc. also pollute the air. Carbon monoxide is produced by the incomplete combustion of the coal and other fossil fuels, natural gas, petrol, oil, etc. Smoke released from the motor vehicles and industries is the main source of the carbon monoxide. हमारे पास जो environment जो है, हमारे पास air है, उसको pollute करने के लिए जो different gases हैं, जैसे कि carbon monoxide है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में NO और NO2 आते हैं, इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तमाम गैसें जो हैं ये हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं. सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल इन फैक्ट्रीज. हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो किससे बनता है? हमारे पास जो कोल इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में बर्न किया जाता है उससे हमारे पास क्या चीज बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO4 बनता है. Smoke released from thermal power stations usually contains sulfur dioxide. Oxides of nitrogen are produced by burning of coal and oil at high temperature in industry and vehicle engines. जो हमारे पास गाड़ियों से धुआं निकल रहा है और जो इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है उनसे जो गैसेस बनती हैं वो हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होती हैं, जिसमें NO और NO2 पाए जाते हैं. Chlorofluorocarbons are compounds which contain chlorine, fluorine and carbon atoms. जो हमारे पास chlorofluorocarbons होते हैं उनमें हमारे पास क्लोरीन के, फ्लोरीन के और कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं. एंड chlorofluorocarbons are used in aerosol sprays, refrigerators and air conditioner systems. On leakage from these applicants, chlorofluorocarbon enters in the air. Fossil fuels, coal, natural gas, oil, petrol, etc. and aerosol are the main source of air pollution. Due to chlorofluorocarbons, our ozone is depleting. Properties of air pollutants there and effects on the human organ systems. First one is carbon monoxide. Carbon monoxide is a colorless, so कोई color नहीं होता, odorless, इसकी कोई smell नहीं होती, and poisonous gas, बहुत जहरीली गैस होती है. इसकी तीन जो identification करने के हैं कि वो colorless होती है, odorless होती है और poisonous gas होती है, that is CO, carbon monoxide. It affects the human organ system badly and causes headache, brain damage and respiratory problems. When carbon monoxide reaches our blood, it binds with hemoglobin. Hemoglobin is a pigment present in red pigment present in the red blood cells, and its function is to take the oxygen. इनका फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैरी किए हुए होते हैं. सो जब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में एंटर होती है तो हेमोग्लोबिन के साथ वो मिल जाती है, बाइंड हो जाती है, चिपक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी है जो ऑक्सीजन कैरिंग की प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है. सो हेमोग्लोबिन एंड रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज अ कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल. इसकी कुछ स्मेल होती है जो इरिटेट करती है. इट डिसॉल्व्स इन रेन वाटर एंड कॉजेज एसिड रेन. Exposure to sulfur dioxide causes breathing difficulties, lungs cancer, etc. Oxides of nitrogen. Oxides of nitrogen are also toxic gases. They dissolve in air, they dissolve in rainwater to cause acidic rain. They have severe effects on the lungs and damage them. Effects of human activities on environment. इंसानों की कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारी environment को खराब कर रही हैं या affect करती हैं? Human activities such as burning of fuels, excessive use of vehicles, aerosols, fertilizers, insecticides, pesticides, etc. are and deforestation and affecting the environment badly. We will discuss here a few examples of adverse effects of human activities on the environment. First one is greenhouse effect. When sunlight falls on the earth, a small part of it absorbed by the earth and is converted to heat energy. हमारे पास जो सनलाइट है, सूरज से जो लाइट आ रही है वो अर्थ के ऊपर गिरती है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो अर्थ एब्सॉर्ब कर लेती है. A part of this heat energy is reflected by the earth back to the atmosphere.
जब वो कुछ रिफ्लेक्ट कर लेती है, जो बचा हुआ हिस्सा होता है हमारे पास हीट एनर्जी का, वो अर्थ वापस भेजती है इनटू एटमॉस्फेयर. Some gases present in the atmosphere, for example, carbon dioxide, methane, oxides of nitrogen, water vapors, etc., trap a part of the heat reflected by the earth, causing increase in the atmospheric temperature. अब क्या होता है कि हमारे पास कुछ गैसेस ऐसी हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, ये तमाम चीजें जो होती हैं ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, तो ये ट्रैप कर लेती हैं हीट को, जो कि हमारे पास सनलाइट से आ रही होती है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है, वो हमारे पास बढ़ जाता है. These gases are called greenhouse gases. ये गैसेस हमारे पास क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज दीज आर द रीजंस they trap that energy and the phenomena is called greenhouse effects. Look at here, हमारे पास सन से रेज आ रही हैं जो कि एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं, और उसमें से कुछ रेज जो है वो हमारे पास अर्थ एब्सॉर्ब कर लेती है थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस, वाटर वेपर्स जो है वो ट्रैप कर लेते हैं, और बाकी जितनी भी रेज होती हैं, सनलाइट की एनर्जी रेज होती हैं, वो वापस भेज दी जाती हैं, और इस फिनोमेना को कहा जाता है ग्रीन हाउस फिनोमेना, और इन गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस. ओजोन डिप्लीशन, अ लेयर ऑफ ओजोन, ओजोन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो है O3. In upper atmosphere of the earth stops the ultraviolet rays coming from the sun to the earth. जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज होती हैं, सन से आ रही होती हैं जमीन की तरफ, उनको जो रोकते हैं, रोकने के लिए हमारे पास एक लेयर बनी हुई है, उस लेयर को अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर बनी हुई है, उस लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर. उस लेयर को हम क्या कहते हैं? ओजोन लेयर. और वो अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल रेज सन से आ रही होती हैं उनको रोकती हैं, और ये हमारे पास एटमॉस्फेयर के ऊपर बनी हुई होती है. In this way, the living things on the earth remain safe from the harmful effects of the ultraviolet radiations coming from the sun. Chlorofluorocarbons means chlorine, fluorine and carbons. So chlorofluorocarbons, which are used in air conditioner, refrigerators, sprays, cans, etc., enter the air on the leakage from the applicants. जो इन एप्लीकेंट्स में से जितनी भी रेज निकल रही हैं वो कौन सी रेज होती हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ऑन रीचिंग द ओजोन लेयर, जब ये वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये रीच करती हैं हमारे पास ओजोन लेयर को, तो वो ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं. ओजोन लेयर जब डैमेज होती है तो वहां पे क्या हो जाता है? होल क्रिएट हो जाता है, और उस होल से डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो इंटर हो जाती हैं इनटू द अर्थ. Hence, the ozone layer is depleted. This phenomena is known as ozone depletion. Through this क्या होता है कि हमारे पास ozone depletion start होती है. Global warming. Due to human activities like burning of fuels, etc., the amount of greenhouse gases is increased in the atmosphere. This speed up the greenhouse effects. The increasing rate of greenhouse effects and ozone depletion is increase the average temperature of the earth. As a result, the earth globe is getting warmer. This is called global warming. क्या हुआ है कि हमारे पास ह्यूमन की एक्टिविटीज में क्या क्या शामिल है? वो हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं, मींस उनसे हमारे पास क्या निकल रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो रही हैं. इन तमाम गैसेस की वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इंक्रीज होती हैं अमाउंट में एटमॉस्फेयर में इनकी अमाउंट में जो है वो इंक्रीजिंग आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और ओजोन की डिप्लेशन जो है वो ज्यादा पॉसिबल होती है, जिसकी वजह से ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज इंटर होती हैं अर्थ में. जब ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज इंटर हो जाती हैं अर्थ में, तो उसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो राइज कर जाता है, वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अर्थ ग्लोब होता है वो वार्मर हो जाती है, वो ज्यादा गर्म हो जाती है. इस प्रोसेस को या इस चीज को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, द आइस इन द पोलर रीजन्स एंड at the mountains melt at a greater rate. हमारे पास जो आइस है, जो कि हमारे पास आइस है पोलर रीजन्स के ऊपर, वो पिघलना शुरू हो गई है. क्यों? किस वजह से? क्योंकि हमारी जो ग्लोब है, हमारा जो अर्थ है, उसका टेम्परेचर राइज करता जा रहा है डे बाय डे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. This lead to rise in the level of sea waters, which creates floods in low-lying coastal areas. The climate of many regions of the world is also changing due to global warming. The global warming is thus a threat to the life on the earth. Acidic rain. Sulfur dioxide and oxides of nitrogen are present in the atmosphere as air pollutant. हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जिनमें NO और NO2 शामिल हैं,
ये दोनों चीजें जो है वो एटमोस्फेयर में बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो एयर पोल्यूटेंट्स है वो बढ़ रहे हैं, जैसे कि ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO है हमारे पास, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये जब गैसेज जो है हमारे पास बढ़ रही हैं एटमोस्फेयर में, तो हमारे पास एयर पोल्यूट हो रही है। They get dissolved in water vapors, in clouds and turn into acid like sulfuric acid and nitric acid। अब क्या होता है कि हमारे पास जो क्लाउड्स मौजूद हैं एयर, जो हमारे पास क्लाउड्स मौजूद हैं एयर में, हमारे पास जो एयर में क्लाउड्स मौजूद हैं वो कहां से हमारे पास आते हैं? थ्रू वाटर्स, ओशंस, वहां से हमारे पास जो है वो वाटर वेपर्स बनते हैं, वाटर वेपर्स से हमारे पास क्लाउड्स बनते हैं। अब क्लाउड से जब ये वाली गैसेस रिएक्ट करती हैं तो वो गैसेस जो हैं वो बना देती हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड। अब जब ये क्लाउड्स में मौजूद ये दो गैसेस पाई जाती हैं जो कि टॉक्सिक होती हैं, वो हमारे पास क्या, इन द रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास रेन होती है, और उस रेन के अंदर ये दो गैस एसिडिक्स भी पाए जाते हैं और वो पोल्यूटेंट्स इन क्लाउड्स पाए जाते हैं। These acids make the rain water acidic, और इन एसिड्स की वजह से क्या होता है, हमारे पास रेन जो है वो एसिडिक हो जाती है, और जो कि हार्मफुल है हमारे पास इन खेतों के लिए, फील्ड्स के लिए। Deforestation. Forests are our great wealth. They bring favorable changes in climate of an area. They stop storm and bring rains. They are sources of many useful materials such as timber, firewood, resins, gums, and medicines, etc. They prevent soil erosion. They provide habitats to wide variety of wildlife. Unfortunately, forests are cut to meet the demand for timber and to gain land for housing and agriculture. As a result, the ecosystem is destroyed. Destruction of the forest as a result of human activities is called deforestation. Effects of deforestation on the environment. Deforestation has many adverse effects on the environment. It changes weather and climate. The roots of trees hold the soil. Cutting of tree leads to soil erosion, and fertile part of the soil is lost through this process. When forests are cut, rate of evaporation is reduced, which results in less rain. Deforestation decreases the carbon dioxide consumption by plants, increasing its allowance in the environment. This leads to the increased greenhouse effects and global warming. Effects of deforestation on wildlife. All non-cultivated plants and non-domestic animals of an area are collectively called wildlife. Deforestation destroys the habits of wildlife. The existing rise of wildlife is increased while the natural balance maintained by the wildlife is disturbed. Lack of natural resources. Resources are material in the environment that are ready for human use or may be used in future. Fossil fuels, coal, natural gas, oil sector, mineral trees, animals, water sector are all natural resources. The resources on the earth are limited. Many of them, for example, mineral and fossil fuels are non-renewable. As resources that does not regenerate quickly is called non-renewable resources. Conservation of resources. Fossil fuels are present on the earth in limited quantities. Their unwise use must be stopped and they need to conserve. 3. Our strategy, in which we have reduce, reuse, recycle, can adopt for conservation of resources. The first one, the first strategy in this connection is reduce. The use of non-biodegradable objects should be reduced and the resources which are used in their manufacture should be conserved. The second step in the 3R strategy is reuse. The non-biodegradable objects should be used again and again instead of throwing them after first use. The third one strategy is recycling. The waste objects made of non-biodegradable materials should be collected, cleaned, melted, and remolded into new objects. By adopting the above said 3R strategy habits, we have conserved our resources.
Thanks.